So top stocks as fast as possible. Starting things off with Nifty's weekly chart, हम लोग देख सकते हैं कि जो 13 मूविंग एवरेज है, 13 मूविंग एवरेज उसके आसपास आया था आज के हफ्ते में. इनफैक्ट 13 मूविंग एवरेज है 457. द लो फॉर द वीक वाज 578. सो 100 पॉइंट के रेंज में आया था, 100 पॉइंट के अंतर में आया था, विच इज क्वाइट क्लोज, बट सपोर्ट लेके ऊपर आ गया है. दैट बीइंग सेड, ये हफ्ते में हम लोग लोअर हाई और लोअर लो देख सकते हैं. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस उतना खराब नहीं है. क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो क्लोज है उसके ऊपर है लगभग, विच इज अ गुड साइन इन माय व्यू. आरएसआई इज अबाउट 60 नाउ. आरएसआई के ऊपर अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक और चीज हम लोग देख सकते हैं दैट हियर वी कैन सी समवॉट ऑफ अ RSI divergence happening because price is making higher highs, RSI is making lower highs, which means that momentum शायद थोड़ा lacking है, but that is not to say it's a bearish sign. क्योंकि बहुत लोग को लगता है RSI डाइवर्जेंस आ गया इंस्टेंटली बेरिश हो गया, वैसा नहीं है मेरे हिसाब से. बुलिशनेस इज स्टिल वेरी क्लियरली देयर, इतना अच्छे से 3 दिन के अंदर, ठीक है, 3 दिन के अंदर फ्रॉम द लोज टू इट्स हाइज इट्स एबल टू रिकवर 320 पॉइंट्स ऑन अ डे, व्हिच इज नॉट वेरी very strong. So I think it's overall a very good sign. ओवरऑल मार्केट बुलिश ही है. एक और बुलिश चीज अगर मैं बोलूँ तो वो है कि इसके हम लोग ऊपर क्लोज कर पाए हैं, which is a good sign. And today's high actually right around this close, which is possibly where it took resistance. और हाँ, मेनली तो वही देख रहे हैं हम लोग, हायर हाई हायर लो देख सकते हैं, विच इज अगेन अ गुड साइन. 60 मिनट चार्ट पे अगर मैं आता हूँ, हम लोग लेवल्स देख सकते हैं, और अगर लेवल्स देखें तो हम लोग देख सकते हैं दैट इट इज अ डिसाइसिव क्लोज अबव 835 लेवल. बेसिकली 835 के नीचे आ गया था. इनफैक्ट ये पहला कैंडल था दैट इज गॉट ट्विटर एंड presumably the other social media platforms raving and raging because ये एक बहुत गंदा सा शेक आउट कैंडल हो गया था, और उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ा सेलिंग आ गया, बट ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं है. ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि डिस्पाइट द रीटेस्ट इट इज स्टिल हेल्ड ऑन टू इट, व्हिच इज अ गुड साइन. आरएसआई इज बिलो 60. ऑनेस्टली दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर इन माय व्यू. 5 मिनट चार्ट फटाफट से देख लेते हैं. वी कैन सी हियर दिस वन कैंडल, ओके, सिंगल कैंडल 9:30 बजे की was 72 पॉइंट्स ऑन निफ्टी. दैट इज मैसिव. टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, कल का दिन ये है, कल के दिन का पूरा रेंज 100 पॉइंट का था. इमेजिन कल के दिन का पूरा मूवमेंट जो होने वाला था वो एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल में हो गया. हाउ वुड यू फील? इनफैक्ट इफ आई गो फर्दर डाउन, इफ आई गो टू द 1 मिनट चार्ट, ठीक है, 1 मिनट में और भी हम लोग को पता चलेगा 1 मिनट में कितना मूव हो गया. इनफैक्ट एक्चुअली 3 मिनट के अंदर जो 72 पॉइंट्स था, मेनली 3 मिनट के अंदर ही हुआ है, विच इज अ मैसिव साइन. ओके, सो हाँ, वीकली एनालिसिस है, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस इंट्राडे शार्प मूव आल्सो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर इट्स गोइंग. एंड ओ माय गॉड, ये क्या दिखा रहा है? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, ये तो करना ही पड़ेगा. इफ इट्स सेइंग तो मतलब कुछ रीजन से बोला होगा, सो कर दो यार. इट्स कंप्लीटली इजी टू डू. टेक 5 seconds and now we come back to the 13 MA chart, weekly chart of bank nifty. तो हम लोग ये देख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, अगेन दीज आर लाइव अनएडिटेड वीडियोस, सो ये सब निकल नहीं पाता. RSI is below 60, but that's honestly not a very big problem. I feel overall positive लग रहा है. हाँ, yes, we can see lower highs and lower lows, but honestly it's not a big deal breaker in my view. Still holding on to this level 33,800 का level, which is I think very important. Now coming to the daily chart. Daily chart हम लोग देख सकते हैं 50 में ब्रेक किया है, which is a good positive sign. और पिछले 2 दिन, इनफैक्ट आज एक पूरे हफ्ते प्रिटी मच में सेकंड हाईएस्ट क्लोज है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोज था ये डोजी का. तो ओवरऑल दैट्स अ वेरी गुड साइन इन माय व्यू. RSI 50 जस्ट क्रैक करने वाला है अगेन, दैट्स अ गुड साइन. अगर लेवल्स देख लें, इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन था, ठीक है, ये वाला जो जोन था एक्चुअली वो ब्रीच कर लिया है, विच इज अ गुड साइन. ठीक है, वो दैट्स अ गुड साइन. द प्रॉब्लम रियली कम्स इन व्हेन वी टॉक अबाउट द मूविंग एवरेज. हम लोग देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, 200 MA का भी रेजिस्टेंस है. सो आई थिंक दिस लेवल माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट जोन. ऑब्वियसली 35,000 साइकोलॉजिकल भी है, सो दैट इज वन लेवल आई एम लुकिंग एट. अनदर लेवल आफ्टर दैट इज 35,338. तो ये वाला जो लेवल है हम लोग वो देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. एंड आफ्टर दैट रोड सीम्स टू बी क्लियर फॉर 35,800, जो एक्चुअली लास्ट टाइम हर्डल बन गया था. तो देखते हैं, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट कल बैंक निफ्टी वीक था, आज निफ्टी वीक था. So overall, if we look at the sectors, okay, if we look at the sectoral indices, we can see banks were actually doing very well, 1% up.
रियल्टी डिड वेरी वेल. रियल्टी में मेरे को एक्चुअली एक पूरा वीडियो ही बनाना है. रियल्टी आई एम एक्चुअली बुलिश ऑन फॉर द पास्ट 1 मंथ, 1.5 month. मैंने बोला भी था ट्रेडिंग व्यू पे. बट या, ओवरऑल वी कैन सी good performance by sectors, but broad market indices, Nifty is underperforming, some clear underperformance by some other sectors also, mid caps also down. Birds एकदम जो birds है वो पागल हो रहे हैं बाहर, but ठीक है, we'll have to make do. India VIX closes below 12 for the week, which is also a very important sign. So with that quickly dealt with, चलो हम लोग we'll dive deeper into the top stocks of the Indian markets. And top stocks of the Indian markets, what is it showing us? This is Reliance's weekly chart, and what we can see, 50 MA bounce happening here, higher high, higher low for the week, which is a good sign. 13 MA weekly support, again a good sign. But okay, coming to the daily chart, हम लोग देख सकते हैं कि 2125 लेवल रिजेक्ट कर दिया है उसने, नीचे आ गया उससे. सो आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन. 2125 पे काफी सेलर्स बैठे हैं. RSI 50 also rejected, but ठीक है, let's see how Monday's price action goes. एंड आई बिलीव आज रिजल्ट था, कल रिजल्ट है, वैसा कुछ है. सो देखते हैं कैसा चलता है वो. HDFC Bank on a weekly basis, we can see it's come down below this red zone, which is again not very good sign. Weekly RSI below 50, not a particularly good sign, but ठीक है, let's see how it goes. 50 weekly moving average is a few percentage away, 4% away, which honestly is quite close, I would say, by judging by how far it was at this point, which is 43%. So 43% इधर पे distance था फेब में, वो डिस्टेंस नैरो डाउन हो गया है 4% पे. तो काफी डिफरेंस नैरो डाउन हो गया है मेरे हिसाब से. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई फील. नेक्स्ट स्टॉक विच इज एक्चुअली इन्फोसिस. नाउ इन्फोसिस में हम लोग क्या देख सकते हैं? हाईएस्ट वीकली ATH क्लोज. ओके, वेरी वेरी गुड क्लोज, वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज फॉर इन्फोसिस इन माय व्यू. डेली चार्ट बस फटाफट से देख लेते हैं. वी कैन सी काइंड ऑफ द ATH क्लोज कल से बस 0.25 पॉइंट्स ज्यादा है, विच इज अ गुड साइन. Not much to talk about with Infosys because we've already spoken about it at length, और उतना कुछ हिला नहीं है. नेक्स्ट कमिंग टू HDFC हम लोग देख सकते हैं वीकली बेसिस पे भी कंसोलिडेट कर रहा है. इनफैक्ट अगर हम लोग हाई टू लो का रेंज लेते हैं, देन इट हैज बीन इन द सेम रेंज फॉर द पास्ट 140 डेज, मतलब आधा साल ही हो गया 11% की रेंज में. और अगर हम लोग क्लोजिंग बेसिस का रेंज लेते हैं, मतलब ये वाले से, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इधर से, I'll just do it, I'll just stretch it, इधर से लेके इधर तक रेंज में ही रहा है इफेक्टिवली 7.7% की रेंज में फॉर 147 डेज, विच इज अगेन नॉट वेरी गुड इन माय व्यू. अगर कोई स्ट्रेंथ के लिए मोमेंटम स्टॉक टाइप देख रहा है, दैट्स क्लियरली नॉट what HDFC has been these past few days. RSI is at 50, which is fine, honestly not a big deal. Next stock is ICICI Bank, and ICICI Bank पे हम लोग क्या देख सकते हैं? काफी अच्छा वीकली कैंडल है. इनफैक्ट, is this the highest weekly close? Yes, this is the highest weekly close. And the CMP is at 676. Very strong move. I think this is one of the main reasons why Bank Nifty was actually able to go up by this much. हम लोग देख सकते हैं आज this ICICI Bank is up 3%. And if we see from the 50 moving average, इधर था close, 50 मूविंग एवरेज से 5% इन जस्ट अराउंड 2 सेशंस और सो. RSI 60 के ऊपर, अगेन ग्रेट साइन. लेवल्स दिखा देता हूँ बस एक बार. यू कैन सी इट इज राइट एट दिस जोन. सो ATH के पास ही है. ATH बनाया नहीं है आज उसने, 2 पॉइंट से रह गया, बट स्टिल आई थिंक इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड थिंग to see. Next stock is Kotak Bank. Yes, I know we have overshot the 7-minute mark, but this is the weekly analysis. तो ठीक है यार, इतना तो करना ही पड़ता है. Come on, I'm giving you extra info, so that's good. Now Kotak Bank weekly 50 moving average, very good sign. I think 13 moving average, so I'm assuming 17, 75, 70, 80 के ऊपर अगर जाता है, then I think momentum can come. Until that time, I think थोड़ा सा hesitation लेगा. That being said, it is in this support zone. ठीक है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एक बाउंस हुआ था, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है. पॉसिबली अगर ऊपर जाने वाला है तो ऑब्वियसली अक्यूमुलेशन ही हो रहा होगा, आई एम प्रिज्यूमिंग. बट या, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ड्रॉइंग्स जो हम लोग ने पहले डाले थे वो डाल देता हूँ. वी कैन सी इट इज राइट इन दिस जोन इटसेल्फ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. अगेन 1760 के रेजिस्टेंस के बारे में तो वीव स्पोकन अबाउट इट सो मच कि हर टाइम ऐसा रिपीट करने में भी ऐसा लगता है, अरे कितना रिपीट करूंगा मैं. बट या, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग फॉर SBI पे मैं जूम इन कर देता हूँ बस, एंड वी कैन सी fairly good close, but still we are seeing lower highs and lower lows, which is not a very good sign. RSI 67 is a little high, but अभी फिलहाल के लॉन्ग के लिए possibly हाँ, we can see daily
50 मूविंग एवरेज विच इज अ गुड साइन, बट लेट्स सी. 13 मूविंग एवरेज भी तोड़ा है, बट या लेट्स सी हाउ इट गोज. एसबीआई पॉसिबली रेंज ब्रेकआउट कर सकता है अगर उसको करना है तो. नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक में हम लोग क्या देख सकते हैं? 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट ऑन द डेली चार्ट, RSI 50, एंड वीकली चार्ट पे it's a spinning top candle, RSI 60. So let's see, possibly this is where Axis Bank might just accumulate some momentum. Let's see how it goes. By the way, if you're curious about a very interesting investing thing that I shared on Twitter, make sure you check my account out at Markets with KR, and don't forget to subscribe. कल एक hopefully weekly analysis आएगा और एक और video आएगा. So be tuned for that. Stay tuned for that. That's it for this one. See you next. Have a great weekend.